Hello students, I Dilip Kumar Jain, PGT Physics, KV number 1, Udaipur. Today I am here with you student with chapter number 2, Units and Dimension of class 11th Physics, part 1. In this session we will cover following points. First one, physical quantity, fundamental and derived quantity. Second one, unit, fundamental and derived unit. Third one, characteristics of standard units. Fourth one, FES, CGS, MKS and SI system of units. Definition of fundamental SI units. Measurement of length, large distances and small distances. Measurement of mass and measurement of time. Physical quantity. A quantity which is measurable is called physical quantity. Fundamental quantity. A physical quantity which is the base and cannot be derived from any other quantity is called fundamental quantity. Example, length, mass, time, etc. Derived quantity. A physical quantity which can be derived or expressed from base or fundamental quantity or quantities is called derived quantity. Example, speed, velocity, acceleration, force, momentum, torque, energy, pressure, density, thermal conductivity, resistance, magnetic moment, etc. तो यहाँ पर फर्स्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल फिनोमिना है उसकी स्टडी करने के लिए उसका मेजरमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी कुछ क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, जो भी क्वांटिटी है उसको मेजर कर सकते हैं, जो भी उसका एक एट्रीब्यूट्स है उसको मेजर कर सकते हैं। ऐसी जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ये जो है मेन क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है, और ये जो है अपने आप में कंप्लीट होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटी. They are just starting points of measurement. Example, length, mass, time, etc. है. Derived quantity है. Derived quantity, the quantity which can be derived from fundamental quantities. Speed, velocity ये सारे जो है उसके example हैं. Now unit. Measurement of any physical quantity involve comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit. यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? आपका एक फिक्स वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और उस फिक्स वैल्यू को अपन दूसरी किसी भी उसके मल्टीपल के रूप में उससे कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट इज जस्ट प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी chosen इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. Example, meter, kilogram, second, etc. Derived units, the units of the derived quantity which can be expressed from the base or fundamental quantity are called derived units. Example, meter per second, kg per meter cube, kg meter per second square, kg meter square per second square, etc. System of units, a complete set of both fundamental and derived unit is known as the system of unit. सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल और डिराइव्ड. इस सिस्टम के अंदर फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों प्रकार की यूनिट आ जाती हैं और दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल फिनोमिना in terms of measurement of physical quantities. Characteristics of standard unit. A unit selected for measuring a physical quantity must fulfill the following requirement. It should be well defined, it should be of suitable size, that is, it should neither be too large nor too small in comparison to the quantity to be measured.
it should be reproducible at all time, it should not change from place to place or time to time, it should not change with physical conditions such as temperature, pressure, etc. It should be easily accessible. तो अब देखिए कि जो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी मेन क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, उसकी बहुत अच्छे से डिफाइनेशन होनी चाहिए। दूसरा जो है उसका साइज जो है वो सुटेबल होना चाहिए, ना तो बहुत ही छोटा होना चाहिए ना बहुत ही बड़ा हो। और ये जो भी आपका यूनिट है उसको अपन वापस बना सकें। इट शुड नॉट बी चेंज प्लेस टू प्लेस, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। और इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, और उनके साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये जो है इजीली यूज करने के लायक होना चाहिए। ये जो है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन अर्लियर टाइम वेरियस सिस्टम like FPS, CGS, MKS system of unit were used for measurement. They were named so from the fundamental units in their respective system as given below. FES, CGS और MKS, three popular system of units before introduction of the SI system of units. देखिए फर्स्ट वन जो है आपका लेंथ। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। एफईएस के अंदर उसको फुट के अंदर मेजर करते हैं, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर के अंदर, और एमकेएस के अंदर मीटर के अंदर। तो लेंथ की जो यूनिट है एफईएस के अंदर फुट है, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर है, और एमकेएस के अंदर मीटर है। मास की एफईएस के अंदर पाउंड, सीजीएस के अंदर ग्राम, और एमकेएस के अंदर किलोग्राम। और टाइम तीनों के अंदर जो है इसकी यूनिट जो है सेकंड है। सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट्स। The SI system with standard scheme of symbol, units and abbreviation was developed and recommended by General Conference on Weight and Measured in 1971 for international usage in scientific, technical, industrial and commercial work. तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1971। और उससे पहले कौन से सिस्टम यूज किए जा रहे थे? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। तो ऐसे सिस्टम से अपन को क्या एडवांटेज होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। SI system uses decimal system and therefore conversion within the system are quite simple and convenient. SI system के अंदर जो है यूनिट्स उसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाए? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम के अंदर आपके दूसरी जो भी यूनिट्स हैं उसके अंदर आप इजीली कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे मीटर है तो सेंटीमीटर के अंदर है, किलोग्राम है मिलीग्राम के अंदर है, उसके अंदर अपन मेजर कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। मेन देखेंगे अपन क्या क्या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर 7 यूनिट्स इज नोन एज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मेन यूनिट जो है अपना लेंथ को अपन सिंबल यूज से एल से यूज करेंगे। ऐसे यूनिट मीटर है, सिंबल जो है स्मॉल एम। मास सिंबल कैपिटल एम है, ऐसे यूनिट किलोग्राम है, और इसको लिखेंगे स्मॉल केजी। टाइम सिंबल टी, सेकंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल ए, ऐसे यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के, कैपिटल के। केल्विन सिंबल by capital K only. Light intensity capital CD, candela, और small cd is what? Symbol. Amount of substance mol symbol के अंदर MOL E नहीं आएगा। Supplementary units plane angle जो है किसमें होगा? 2 dimensions के अंदर होगा।
इसका सिंबल डी थीटा है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है, और इसको सिंबल कैसे करते हैं, आर ए डी। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशंस के अंदर होगा, इसको डी ओमेगा से बताएंगे। इसकी जो एसआई यूनिट जो है वो स्टे रेडियन है, और इसको अपन एस आर से बताते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स, मीटर। The meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 by 299792458 of a second। जो सनलाइट जो है इतने पार्ट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ व्हाट, मीटर। और आप सभी को मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है, 299792458 मीटर पर सेकंड। किलोग्राम, द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप of the kilogram, a platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weight and Measure at Civiters near Paris, France, 1880 नाउ। देखिए लास्ट ईयर जो है इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है किलोग्राम की आपको थोड़ी सी चेंज होगी, उसको आप और भी देखिएगा। सेकंड, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 billion 192,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atoms। और ये डेफिनेशन जो है कब दी है, 1967 के अंदर। मीटर की डेफिनेशन कब दी है, 1983 के अंदर। किलोग्राम की डेफिनेशन कब दी हुई है, 1889 के अंदर। अब देखिए एम्पियर, फोर्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी, एम्पियर। एम्पियर की यूनिट कब दी गई है, 1948 के अंदर। The ampere is the constant current which is maintained in two straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between this conductor a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length। Next fifth one, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसके एसआई यूनिट जो है केल्विन। केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये डेफिनेशन जो है 1967 के अंदर दी गई है। कैंडेला, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian। और ये डेफिनेशन 1979 के अंदर दी है। और लास्ट डेफिनेशन जो है 7 डेफिनेशन जो है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री entities as there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। 1971 के अंदर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट है मोल, उसकी डेफिनेशन दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लेन एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल डी थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क ds to the radius r and its SI unit is what, radian। d theta equal to what, length of the arc, length of arc is what, ds upon radius is what, r। d theta equal to ds upon r। इसकी SI यूनिट जो है वो क्या है, रेडियन है, ठीक है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डीए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब एट द एपेक्स ओ as the center to the square of its radius r। its SI unit is what, stay
रेडियन। इसकी डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सॉलिड एंगल है डी ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क ऑन स्फीयर अपॉन square of the radius. The following conventions are adopted while writing a unit. Even if a unit is named after a person, the unit is not written in capital letter. We write joules, not joules. Very important. कोई भी अगर यूनिट जो है किसी के नाम से शुरू होती है तो जनरली अपना कोई भी नाम लिखते हैं तो अपना फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, लेकिन जब यूनिट में अगर नाम आ रहा है तो फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Second one, for a unit named after a person, the symbol is a capital letter. Example, for joules, we write capital J and rest of them in lowercase letter. Example, second is written as S. The symbol of unit do not have plural form centimeter, not 70 meters, or ms, or 10 Newton, not 10 newtons. Punctuation marks are not written after the units. 1 liter, only 1 liter equal to 100 cc, not 100 c dot c. डॉट के जो है कभी भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे। सम यूनिट्स आर रिटेन फॉर जनरल यूज थ्रू आउटसाइड एसआई यूनिट। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो अपन डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उसका कहीं पे भी एसआई यूनिट के अंदर जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। जैसे मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होंगे, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स, 3600 सेकंड्स, 1 डे के अंदर आपके 24 आवर्स होंगे और 86,400 सेकंड। 1 ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 365.25 डेज होंगे और उसको टोटल सेकंड के अंदर देखेंगे तो 3.156 × 10⁷ सेकंड। डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 180 रेडियन। रिलेशन कहाँ से आएगा, 2 पाई इक्वल टू 360, तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 और व्हाट वी गेट, पाई अपॉन 180 रेडियन। लीटर, 1 लीटर इक्वल टू व्हाट, 1 डेसीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। Also remember 1 dm is what, 1 dm equal to what, 10 centimeter. So 1 dm cube equal to 10 into 10 into 10 means 1000 centimeter cube. So we simply write 1 liter equal to 1 dm cube. फिर देखेंगे टन, टन जो है आपका क्या होगा, 1000 kg के बराबर होगा, 10 क्विंटल के बराबर। कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर। बार प्रेशर की यूनिट है जो आपका 0.1 मेगा पास्कल या 10⁵ पास्कल यूज करते हैं। क्यूरी 3.7 × 10⁻10 per second. Unit of radioactive disintegrations. Rontgen R equal to 2.58 × 10⁻⁴ कूलम पर kg। एक्सरे जिसकी डिस्कवरी की थी उनके लिए जो रोन्टजन का जो है रेडिएशन का इन्होंने यूनिट किया था, इसके अंदर कूलम पर kg एक स्पेसिफिक रेशियो है चार्ज टू मास। क्विंटल Q इक्वल टू 100 kg। बर्न इक्वल टू व्हाट, 100 फर्मी मीटर स्क्वायर और दिस इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। जनरली इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द total surface area of the nucleus. R equal to what, 100 meter square. Hectare is what, 1 hectare meter square or 10⁴ meter square. 1 hectare is equal to what, 10,000 meter square. Standard atmospheric pressure is 1.013 × 10⁵ Pascal. Measurement of length. The order of distance varies from 10⁻⁴ meter radius of nucleus to 10⁻26 meter radius of the universe.
बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे छोटी जो लेंथ है वो क्या, 10⁻⁻14 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ यूनिवर्स 10⁻25 मीटर। द डिस्टेंस ranging from 10⁻⁻5 meter to 10⁻2 meter can be measured by direct method which involve comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard unit। 10⁻⁻5 मीटर से लगा करके 10⁻2 मीटर तक को अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए मीटर रोड कैन मेजर डिस्टेंस एज मच एज 10⁻⁻3 meter. A vernier calipers can be used to measure as small as 10⁻⁻4 meter. A screw gauge, a spherometer is used to measure as small as 10⁻⁻5 meter. For very small distance or for very large distance, we have to use indirect methods. Okay, तो यहाँ पे अपन जिसमें अपने पास एक मीटर रोड है, उस मीटर रोड की हेल्प से आप 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट तक मेजर कर सकते हैं, और स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की हेल्प से 10⁻⁵ मीटर तक 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट जो है वो एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, very important. The following indirect method may be used to measure very large distance is what, parallax method. Let us consider a far away point P at a distance D from our two eyes. Suppose that the line joining the planet to the left eye L and the right eye R subtend an angle theta in radian. The angle theta is called parallax angle or parallatic angle, and the distance LR. B is called basis as the planet is far away. Capital B upon D is much less than 1, and therefore theta is very small. Then taking the distance LR equal to what? B as circular arc of radius, and D we have theta equal to LR upon D, length of arc upon radius, or theta equal to B upon D, or D equal to B upon theta। इस फार्मूले की हेल्प से जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे L और R जो है वो क्या है, आपके लेफ्ट और राइट आइज की जो अपनी पोजीशन है। पैरेलैक्स मेथड के अंदर जब किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं with the help of a tip of a pencil, then all these 3 points, point of observation, tip of the pencil, and our left or right eye must be in a straight line. If not in a straight line, then we have to settle the into a straight line. This method is known as a parallax method. Now measurement of the size or angular diameter of an astronomical object. अब कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका साइज कैसे फाइंड करते हैं। Now इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट में जो अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वी यूज और लेफ्ट एंड राइट आइज, लेकिन जब किसी की साइज देखनी है तो आपको एक ही आइज यूज करनी। मेन डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ आपको। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ द प्लेनेट, एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, the angle subtended by D at the earth E, then alpha equal to D upon D. The angle alpha can be measured from the same location on the earth, and it is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the planets are viewed through the telescope. Since D is known as the diameter of D of the planet can be determined from D equal to alpha कैपिटल डी, ठीक है। यहाँ से अपन टेलीस्कोप की हेल्प से कोई भी एक जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसको एक साइड में जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, और इस प्रोसेस के अंदर जो भी एंगल बनेगा
स्पेक्ट्रोम टेलीस्कोप के अंदर, उसको अपन मेजर कर लेंगे। डी, कैपिटल डी जो है वो अपन उससे पहले जो मेथड डिस्कस कर चुके हैं उससे कैपिटल डी मेजर कर लेंगे। अल्फा अपने पास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसका एंगुलर डायमीटर को अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। Generally this method we study in class 9th sonar, आप सभी को याद होगा। इसके अंदर this method is used to measure the distance of a hill. A gun is fired towards the hill and the time interval between the instant of firing the gun and instant of hearing the echo of the gunshot is noted. This is the time taken by the sound to travel from the observer to the hill and back to the observer. If v is the velocity of sound, s is the distance of hill from the observer, and the t is total time taken, then s, distance of the obstacle or distance of the mountains, can be find s equal to v into t upon 2. Generally we find the time t equal to what? Total distance 2s upon v. So time equal to what? s equal to v into t upon 2. सोनार के अंदर भी आपका इसी प्रकार का फार्मूला था। अब देखते हैं, इन प्लेस ऑफ साउंड वेव्स लेजर कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। लेजर इज ए मोनोक्रोमेटिक इंस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। देखिए साउंड वेव की जगह पे लेजर क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो साउंड वेव जो क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। अर्थ के जैसे बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ बहुत सी प्लेसेस है जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल, देयरफॉर वी यूज द लेजर टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, if t is the time taken by the laser beam in going to and returning from the moon, then distance can be calculated from the formula s equal to c into t by 2, where c equal to what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now estimation of very small distance using electron microscope for visible light, the range of wavelength is from about 4000 angstrom to 7000 angstrom. 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter. Hence an optical microscope cannot resolve particle with the sizes smaller than this. Electron beam can be focused by proper design, electric and magnetic field. The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electron can also behave as a wave. The wavelength of an electron can be as small as a fraction of an angstrom. Such electron microscope with a resolution of 0.6 angstrom which have been built. They can almost resolve atoms and molecules in a material. In recent times, tunning microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the size of the molecule. देखिए by using electron microscope से अपन जो है 10 to power minus 10 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस से और छोटे डिस्टेंस उसको मेजर जो है अपन नहीं कर सकते। देखिए अवोगाद्रोस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, ए सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड इज गिवन बिलो। ओलिक एसिड जो है आपका क्या है, ये सोपी लिक्विड विद द large molecular size of order of 10 to the power minus 9 meter. This idea is to first form monomolecular layer of oleic acid on the water surface. इस मेथड का जो मेन आइडिया जो है वो क्या है कि जब एसिड इस ऑक्जेलिक ओलिक एसिड का जो सॉल्यूशन जो है जब अपन वाटर सरफेस के ऊपर डालेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो मोनोमोलिकुलर लेयर बनाएंगे। We dissolve 1 centimeter of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then we take 1 centimeter cube of this solution and dilute it to the 20 centimeter cube. Using alcohol of the solution is 1 by 400 centimeter cube of oleic acid per centimeter cube of solution. First क्या करेंगे, 1 centimeter cube oleic acid लेंगे, 19 ml जो है वो alcohol लेंगे, उसका solution बनाएंगे,
उस 20 ml सॉल्यूशन के अंदर वापस 1 ml सॉल्यूशन लेंगे और 19 ml जो है अल्कोहल लेंगे और इस प्रकार से वापस अपन एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होगी 1/20 into 20 centimeter cube of oleic acid. Next, we lightly sprinkle some lycopodium powder on the surface of the water in a large drop, and we put 1 drop of this solution in the water. The oleic acid drop is spread into a thin, large and roughly circular film of monomolecular thickness on water surface. Then we quickly measure the diameter of the thin film to get its area. Suppose we have drops in the water. Initially, we determine the approximately volume of each drop is what? V centimeter cube. Volume of n drop of solution is what? Nv centimeter cube. Amount of oleic acid in this solution is what? Nv upon 1/20 into 20 centimeter cube. Now this solution of oleic acid is spread very fast on the surface of water and forms a very thick layer of thickness T. If thickness T जो है वो क्या है आपका size of the oleic acid. If this is spread to form a film of area a centimeter cube, then the thickness of the film is what? Volume of the film upon area of the film, or volume of the film is what? Nv upon 20 into 20 divided by area of the film is what? A centimeter. By using this formula, by using this formula we can calculate the thickness of monomolecular thickness, which is what? Diameter of the oleic acid molecule. If we assume that the film has monomolecular thickness, then this becomes the size or diameter of a molecule of oleic acid. The value of this thickness comes out to be of the order of 10 to the power minus 9 meter. Range of length, the size of the objects we come across in the universe varies over a very wide range. These may vary from the size of the order of 10 to the power minus 14 meter of the tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 to the power 26 meter of the extent of the observation universe. We also use some certain specific length unit for short and large length, which are given below. अब देखिए से फर्मी जो है क्या है 1 फर्मी 1 एफ इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम is 10 to the power minus 10 meter. 1 astronomical unit is what? 1.496 10 to the power 11 meter. Average distance of the sun from the earth. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 1.496 10 to the power 11 मीटर. ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1496 करोड़ किलोमीटर. नाउ 1 लाइट ईयर से टाइम लगेगा आपको, लेकिन 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. It is the amount of the distance traveled by the light in 1 year, that is 9.46 into 10 to the power 15 meter. The distance that light travel with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in 1 year. 1 parsec 3.08 into 10 to the power 16 meter. The distance at which average radius of an Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. रिलेशन क्या है पार्सेक और लाइट ईयर में अंदर? 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ. अब जो भी अपन ऑब्जर्व करो उसकी क्या क्या रेंज हो सकती है वो देखिए. साइज ऑफ प्रोटॉन 10 to the power minus 15 मीटर. साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10 to the power minus 14 मीटर. साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 to the power minus 10. लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस 10 to the power minus 8. Wavelength of a light 10 to the power minus 7 meter. Size of the red blood corpuscles 10 to the power minus 5. Thickness of a paper is 10 to the power minus 4 meter. Height of Mount Everest from sea level is 10 to the power 4 meter. The radius of the earth 10 to the power 7 meter. Distance of the moon from the earth is 10 to the power
8 meter. Distance of the Earth from the Sun is 10 to power 11 meter. Distance of the Pluto from the Sun 10 to power 13. Size of our galaxy 10 to power 21. Distance of the Andromeda galaxy 10 to power 22, and distance of the boundary of the observable universe is what 10 to power 26. So measurement of time, we use an atomic standard of time which is based on the periodic vibration produced in a cesium atom. This is the basis of the cesium clock, sometimes called atomic clock, used in a national standard. In the cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for 919263177 vibration of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atoms. The vibration of the cesium atom regulates the rate of this cesium atomic clock, just as the vibration of a balance will regulate an ordinary wristwatch or vibration of a small quartz crystal regulate a quartz wrist. A cesium atomic clock is used at the National Physical Laboratory (NPL) New Delhi to maintain the Indian Standard of Time. Range and order of the time interval. Lifespan of most unstable particle 10 to power minus 24 second. Time required for a light to cross a nuclear distance 10 to power minus 22 second. Period of X-ray 10 to power minus 19 second. Period of atomic vibration 10 to power minus 15 second. Period of light wave 10 to power minus 15 second. Lifetime of an excited atom 10 to power minus 8. Period of radio waves 10 to power minus 6. Period of sound wave 10 to power minus 3. Wing of eye 10 to power minus 1. Time between successive human heartbeats 10 to power 0. Travel time for light from the moon to the earth. Travel time for light from moon to earth 10 to power 0. Time travel to light from the sun to the earth 10 to power 2. मालूम है अपन को कितना 500 सेकंड्स हंड्रेड्स में आ जाएगा. टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट 10 टू पावर 4 सेकंड्स. रोटेशन पीरियड ऑफ ए अर्थ 10 टू पावर 5 सेकंड्स. 10 to power 5 seconds means 1 lakh seconds. It is almost equal to 86,400 seconds. Rotation revolution period of the moon 10 to power 6. Revolution period of the earth 10 to power 7. देखिए पॉइंट नंबर 15 रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून. ये क्या है, जो मून जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है और अर्थ के चारों ओर रोटेशन है. दोनों का टाइम पीरियड जो सेम है 27.3 डेज. ठीक है, लेकिन अर्थ का ऐसा नहीं है. अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद इन 24 आवर्स एंड इट कंप्लीट वन राउंड अबाउट द सन इन 365.25 डेज. नेक्स्ट 17 point travel time for light from the nearest star 10 to power 8. Average human life span is 10 to power 9 second. Age of Egyptian pyramid is 10 to power 11. Time since dinosaur become extinct 10 to power 15. Or age of the universe is 10 to power 17 seconds. Thank you for watching this session.